Hello student, I am Rashmi Vadva, Assistant Professor of St. Andrew Institute of Technology and Management. Student, today's topic is effect of feedback and first order control system. So students, what do you mean by feedback? If either the output of this or some part of the output is returned to the input side and utilized as a part of the system input, that is known as the feedback. Student, basically feedback plays an important role in the performance or the efficiency of the control system. Basically there are the two types of feedback. If and effects of feedback में क्या है? Effect feedback की discuss करेंगे हम effect of feedback on sensitivity, selectivity, overall gain, stability and noise. So types of feedback, there are the two types of feedback: positive feedback and negative feedback. Positive feedback is at the reference input RS and the feedback output, then the correspondingly diagram is the diagram of a positive feedback control system. RS is your reference input and CS is your output, that is your controlled output. R for reference and C for controlled, and S is a function of Laplace. Last lectures में second और third lecture में हमने discuss किया था transfer function. Basically transfer function is a output by input, Laplace output by Laplace input. That's why it is in the form of S. So when the positive feedback adds the reference input and the feedback output, then the correspondingly feedback is your positive feedback, and you can see the relationship or a transfer function. The concept of the transfer function is, in the case of a positive feedback, is g upon में 1 minus g h. जब भी नेगेटिव आ रहा है नीचे साइन तो दैट मीन्स योर पॉजिटिव फीडबैक है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता तो तुम्हारी नेगेटिव फीडबैक थी. सो इन दिस ट्रांसफर फंक्शन t is a transfer function or a overall gain, g is a open loop gain, and h is a gain of the feedback path, which is a function of frequency. Next is a negative feedback. What do you mean by negative feedback? Negative feedback reduces the error between the reference input RS and the system output. Student, you can see RS is a reference input, CS is a control output, G and H. G is a gain and H is the effect of H is a feedback system. Feedback. G is a gain. So you can see the transfer function. The transfer function of the negative feedback control system is T. T is equals to G upon me 1 plus GH. T is a transfer function, G is the open loop gain, and H is the gain of feedback path. When there is a negative sign in the denominator part, then it is a negative feedback. When there is a positive sign, no, sorry, when there is a positive sign, then it is a negative feedback. When there is a negative sign, then it is positive feedback. Now, what is the effect of feedback? You can see the effect of feedback through this formula, the equation number 2. The overall gain of the negative feedback closed loop control system is the ratio of G upon में 1 plus GH. In numerator G है, denominator में 1 plus GH है. So overall gain may increase or a decrease depending upon the value of the factor 1 plus GH. So if transfer function is increased or a transfer function is decreased, that depend upon the value of 1 plus GS. If your value of 1 plus GS is less than 1, then the overall gain increases, and when the value of 1 plus GS is greater than 1, then the overall gain decreases. When the overall gain increases, then the GS value is negative, and when the overall gain is decreases, then the value of GS is positive, because this gain of the feedback path is negative and positively respectively. Now come to the effect of feedback on sensitivity or effect of feedback on stability and effect of feedback on noise. Discuss one by one. See effect because the both functions G and H is the functions of frequency, so the feedback will increase the overall gain of the system in one frequency range, then correspondingly second frequency range will be decreased. Now effect of sensitivity. First of all, what do you mean by sensitivity? Sensitivity is the overall gain of the negative feedback
closed loop control system of the variation in the open loop gain is defined as, what is the basically a ratio or a function or a definition of sensitivity. Sensitivity is a change in the percentage in T, correspondingly change in percentage in G. So when there is a change in T, so that is by mathematical formula we can we can write as देखिए आप screen पे देख सकते हैं dt by d, that is a change, what percentage change in T with respect to T. Then dg by g, the percentage change in G by G, whereas dt is the incremental change in T due to the incremental change in G. Now we can rewrite this equation एस टी जी. देखिए सबस्क्रिप्ट में हमने एस टी जी को लिखा है अपर टी एंड लोअर जी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. सो डी टी बाई डी जी इंटू में जी बाई टी. हम इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो डू द पार्शियल फ्रैक्शन with respect to g on the both side of the equation, then dt by dg is dt by dg. put the value of t, t की वैल्यू अभी हमने सेकेंड इक्वेशन में निकाली थी, देखिए ये रही the value of t, that is g upon में 1 plus gh, and so write the value of t is g upon में 1 plus gs. अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो अप्लाई द फॉर्मूला u by v. u by v फॉर्मूला क्या होता है, नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो हमने 1 plus gh का होल स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू g 1 है, माइनस ऊपर वाला एज इट इज यानी कि g एज इट इज, नीचे वाले यानी कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू g, तो विद रिस्पेक्ट टू g डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा h. सो 1 plus gh माइनस gh, gh से gh कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट द इक्वेशन 1 upon में 1 plus gh whole square, that is equation number 5. So from the equation number 2 we will get the term g upon में 1 plus gh. So यहाँ से आ जाएगा gt is equals to 1 plus में 1 plus में gh. Now substitute the value of equation 5th and equation 6 in the equation number 4. इक्वेशन नंबर 4 ये रही, इक्वेशन नंबर 4 में हम t की वैल्यू भी पुट कर देंगे और g by t की भी वैल्यू पुट कर देंगे. फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट दिस वन, सी यहाँ से g by t हमारा आ जाएगा 1 प्लस में gh, 1 प्लस में gh. सो हमने दोनों की वैल्यू रख दी है इस इक्वेशन नंबर 4 में. सी द इक्वेशन नंबर 4, dt by dh हमने रख दिया 1 अपॉन में 1 प्लस जी एच होल स्क्वायर और जी बाई टी रख दिया 1 प्लस में जी एच, तो जी एच 1 प्लस जी एच का 1 टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे को ओवरऑल सेंसिटिविटी मिलेगी 1 अपॉन में 1 प्लस जी एच. सो वी गेट द सेंसिटिविटी ऑफ द क्लोज लूप or overall gain of the closed loop system is a reciprocal of 1 plus gs. So sensitivity may increase or decrease depending upon this function 1 plus gh. If the value of 1 plus gh is greater than 1, if the value of 1 plus gh is less than 1, then the correspondingly sensitivity will increase or decrease. If the value of 1 plus gh is greater than 1, then the sensitivity decreases, and if the value of 1 plus gh is less than 1, then the sensitivity is increases. In both the cases, the value of gh, the gh is when the sensitivity is increases, then the gh value is negative because the gain of the feedback path is negative. If the sensitivity is decreases, then in that case gh value is positive because the gain of the feedback path is positive. Next is the effect of feedback on stability. Basically a effect of feedback on stability is a, हम कह सकते हैं a system is said to be stable if its output is under control. If the output is not controlled, then the system is said to be unstable. So if a system is said to be stable, then the output is under control, otherwise system is unstable. You know the equation number 2 when transfer function is g upon में 1 plus gh. The denominator value is 0 if value of gh is 1. See the equation number 2 again, gh upon में 1 plus gh. If the value of gh is negative यानी कि -1 हो जाएगी, then the denominator part is 0. Fine. Then the output of control system will be infinite. If 1 by 0 is infinity, then the control system becomes unstable. So to make the system stable,
we have to properly choosing the feedback order. इस इक्वेशन दो पॉइंट से हमें ये बात पता चलती है, if we want to make a control system stable, then we have to properly choose the value of the feedback. Next is effect of feedback on noise. अब noise का क्या effect पड़ता है, क्या effect पड़ता है feedback पे? To know the effect of feedback on noise, let us compare the transfer function with the with and without feedback due to noise signal. So this is an open loop control system, and this is NS is a noise input add हो रही है एक system में, G and GB2 systems के gain ले लिए हमने, RS and CS हमारे पास output है. Then the open loop transfer function due to the noise signal is CS by में NS, that is equals to GB. Yes, sure. If NS by RS होता, then that is equals to GB. So GB is equals to CS by NS. Now, if we are making the input RS is equals to 0, अगर हमारा RS input 0 के equal है, then CS by NS is equals to GB हो जाएगा. Now consider a closed loop control system. See can in this figure. आपने अब क्या किया, output of some part of the output goes into the input through the feedback system. Then the closed loop transfer function is CS by में NS is equals to GB upon में 1 plus GA GB into H. तो हमने क्या किया, नॉइज सिग्नल को लिया विदाउट फीडबैक भी, ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 7 नॉइज सिग्नल की है विदाउट फीडबैक, एंड इक्वेशन नंबर 8 है with feedback when we are considering into a feedback path. Then compare the equation number 7 and equation number 8. In this closed loop system, the gain of the noise is decreased by the factor 1 plus GA into GB into H, provided that the term 1 plus GA GB H is greater than 1, provided that this term is greater than 1. ऊपर हमारा डिनोमिनेटर में GB वहां पर भी था, 7th इक्वेशन में न्यूमिनेटर में GB था, 8th इक्वेशन में भी न्यूमिनेटर में GB था, पर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन में 1 प्लस GA GB H factor आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर 7 में नहीं था. So in the closed loop system, the gain of the noise signal is decreased by the factor this, and this factor is greater than 1. Now come to the student response of the first order system. जो ये फैक्ट ऑफ द फीडबैक टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार एमडीओ में 10 मार्क्स में पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ फीडबैक या व्हाट डू यू मीन बाय फीडबैक, और व्हाट डू यू मीन बाय नेगेटिव फीडबैक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो जाता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी एंड ओवरऑल गेन. So next is response of first order system. Basically, what do you mean by first order system? What do you mean by response of this first order system? Now consider a open loop transfer function, or consider a first order time response of a first order system. This is the block diagram is shows time response of first order system, in which RS is a reference input, CS is a control output, and this is the 1 upon ST, 1 upon में ST. This is the transfer function, open loop transfer function, and that is connected to negative यूनिटी फीडबैक. दिस इज नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव फीडबैक हो गया. यहाँ पर आपका 1 है तो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होगा. दैट्स व्हाई दिस ट्रांसफर फंक्शन 1 अपॉन में ST इज कनेक्टेड विद द यूनिटी नेगेटिव फीडबैक. दिस साइन नेगेटिव साइन शोज दैट नेगेटिव फीडबैक, एंड यहाँ पर किसी भी फंक्शन का या किसी भी एलिमेंट की एब्सेंस आपको 1 शो कर रही है, तो यूनिटी नेगेटिव फीडबैक होगा. नाउ we know that the transfer function of a closed loop control system having a unity negative feedback. देखिए अगर unity negative feedback नहीं होता तो हमारे पास transfer function की वैल्यू होती CS upon में GS is equals to GS upon में 1 plus GS into HS. अब उस HS की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बिकॉज नेगेटिव यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है. सो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन आपका आया है CS by RS is equals to GS upon में 1 plus GS. Now put the value of GS, that is 1 by ST. Put the value of GS is equals to 1 by ST in the above equation. Now put CS by RS is equals to 1 by ST upon में 1 plus में 1 plus ST, and you will get the 1 upon में ST plus 1. So the power of S in the denominator term is 1. That's why this is the first order system.
दैट्स व्हाई द सिस्टम इज सेड टू बी. हमने बोला ना टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम कब कह रहे हैं? व्हेन वी आर टेकिंग द order or the power of s in the denominator is 1, तो हमारा वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है. मान लो अगर यहाँ पर s की पावर 2 हो जाती, द ऑर्डर ऑफ और द पावर ऑफ s इन द डिनोमिनेटर टर्म इज 2, तो वो सिस्टम इज सेट टू बी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हो जाता है. ठीक है, सो इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. Now the equation, this equation can be rewrite Cs is equals to 1 upon में St plus 1 into Rs. हमने Rs को अपने right side पे लेके चलेंगे. Now the terms are Cs is what? The Laplace transform of the output Ct. Rs is what? The Laplace transform of the input Rt, and T is a time constant. Now find out the order of first order system in the time domain. How to find out? These are the few steps, 5 steps hai. Taking the Laplace transform of the input signal Rt, Rs ka Laplace transform Rt. Consider this equation, Cs is equals to 1 upon my St plus 1 into Rs, and then substitute the value of Rs in the above equation, do their partial fraction, and apply the inverse transform to the Cs. This is the methods. Now come to the impulse response of first order system. अब हमें फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स भी निकालना है, विद यूनिट स्टेप भी निकालना है, और रैंप के साथ भी निकालना है. अब हमारे पास वैसे तो हमारे पास 4 टाइप्स का इनपुट फंक्शन होता है, इम्पल्स, स्टेप, रैंप और पैराबोलिक. बट हम इसमें इम्पल्स, यूनिट स्टेप और रैंप ही करेंगे. पैराबोलिक इज नॉट इन योर सिलेबस. So up to this video or up to this lecture, I am covering the impulse response and unit step response. In next lecture, on the next video, I will discuss unit ramp function. So first of all, what do you mean by impulse response? Students, what do you mean by impulse response? Impulse response वो response होता है system का in which the value of the system is 1 at the input 0. जीरो इनपुट पे सिस्टम की वैल्यू 1 होती है. दैट इज योर इम्पल्स सिस्टम इम्पल्स फंक्शन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. नाउ कंसीडर हियर यूनिट इम्पल्स फंक्शन एज एन इनपुट ऑफ द to the first order system, that is rt is equals to delta t. Delta t is the function through which we denoted impulse response. जो यहाँ पे delta t लिया है, वहां उसमें हम अपने इनपुट को दिखाने के लिए डेल्टा टी से दिखाते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स को, एंड आर टी इज योर input. Rt stands for your input. So apply the Laplace transform on both the side. Rt का Laplace transform होता है Rs, और delta t का Laplace transform होता है 1. मेक श्योर आप इसे चाहे लर्न कर लीजिए, चाहे फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दीजिए. इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी इज द फॉर्मूला फॉर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो आर टी डेल्टा टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 होता है, बिकॉज इसकी वैल्यू जो होती है 0 पे ही 1 होती है, अदर फंक्शंस पे 0 होती है. सो नाउ कंसीडरिंग दिस इक्वेशन, जो ऊपर हमारी फर्स्ट ऑर्डर टाइम रिस्पॉन्स की हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन आई है, दैट इज Cs इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में St प्लस 1 इंटू Rs. सब्स्टिट्यूट द Rs1. अब यहाँ पे Rs को 1 पुट कर दीजिए. Cs इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में St प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा. सो Cs इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में St प्लस 1. then rearrange the equation in the standard Laplace form. then t आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, and Cs is equals to 1 upon में t into s plus 1 by t हो जाएगा, and t को 1 by t की फॉर्म में लिख देंगे, and you will get this Cs is like that, and apply the Laplace transform both the side, and you will get Ct is equals to 1 by t e raised to power minus t by t into ut, because this is the लैप्लास ट्रांसफॉर्म. आप इसको अगर जब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स में चला जाएगा, e रेज टू पावर माइनस टी अपॉन में t into ut. Now you can see the in figure the unit impulse response is like that. Ct is this input, your controlled output is Ct with respect to t, and this is 1 by t, which is exponentially decreases. You can see in this graph, this Ct is an exponentially decaying signal for the positive values of t, and it is 0 for the negative values of t. You make sure ये diagram आपको clear होनी चाहिए. I am repeating again. This Ct is an exponential. This you can see in this equation. This is an exponential decaying signal for the positive value of t, and for the negative value after t it is 0.
So this is the unit impulse response. Now come to the step response of first order system. जैसे हमने impulse response of the first order system किया, ऐसे ही हम step response of the first order system करेंगे और next video में हम ramp पढ़ेंगे. Now considering the unit step signal as an input to the first order. So unit step को हम UT से denote करते हैं. So RT is equals to UT हो जाएगा. RT is UT. This is the input for the first order system. Now apply the Laplace transform on both the side. So RS is equals to 1 by S. आपने RT का Laplace लिया RS, UT का Laplace लिया 1 by S. Now considering the equation CS is equals to 1 upon में ST plus 1 into, this is a standard equation. जो ये आप इक्वेशन देख रहे हैं CS is equals to 1 upon में ST plus 1 into RS, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है फॉर द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम. फिर उसमें हम डिफरेंट क्या चेंजेस कर रहे हैं. कहीं पर फर्स्ट केस में हमारे RS की वैल्यू 1 थी, सेकंड केस में हमारे RS की वैल्यू 1 by S है, थर्ड केस में हमारे RS की वैल्यू 1 by S स्क्वायर हो जाएगी. उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा डेरिवेशन चेंज होता जा रहा है. सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ RS इज 1 by S. Now putting the RS is equals to 1 by S in this equation, 1 upon में ST plus 1 into 1 by S. Rearranging this equation and taking the do the partial fractions because in denominator there are the two terms of S. अब हमें पार्शियल फ्रैक्शन से क्यों सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दो टर्म्स हैं इसकी. अगर एक ही टर्म होती है इसकी तो हमने जैसे पिछले पार्ट में सॉल्व किया था वैसे ही कर लेते. A by S प्लस में B अपॉन में ST प्लस 1. सो 1 अपॉन में ST S इंटू ST प्लस 1. पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे S into ST plus 1, A LCM ले लेंगे, ST plus 1 into BS हो जाएगा. On the both side the denominator term is so cancel each other. Now we will equate the only numerator term. So 1 is equals to A ST plus 1 plus BS. By equating the constant term on the both sides you will get A is equals to 1 and substitute value of A, then you will equate the coefficient of the S term on the both side and you will get the value of B, that is minus T. When you will get the value of A is 1, B is minus T, then substitute the value of both in the above equation. Put the value of A is 1 in this equation. C. In this equation you put the value of A is 1, B की value minus T, and you will take the inverse Laplace transform. C 1 और आपने A की वैल्यू पुट कर दी 1 by S माइनस A की वैल्यू पुट की 1, B की वैल्यू पुट करी माइनस T, then the equation is T upon में ST plus 1 which is equals to 1 by ST into T upon में rearranging this equation. T आपने डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया, T into 1 S plus 1 by T. T से T कैंसिल हो गया, then your CS is equals to 1 upon में 1 by S is equals to CS is equals to 1 by S minus 1 upon में S plus 1 by T. Now taking its inverse Laplace transform on the both side, then CT is equals to 1 C. 1 by S का 1 हो जाएगा और 1 upon में S plus 1 by T हो जाएगा, e raised to power minus T into T upon में small t upon में capital T, that is UT. Make sure this capital T is your time constant. This capital T is a time constant and small t is a function of time. So make sure no need to confuse between capital T and small t. This capital T is a time response, repeating again, and small t is a function of t. Now the unit step response CT have both the transient and the steady state terms. That अब इसके अंदर हमारे पास दो terms मिल रही हैं. In next lecture we will also discuss about the steady state errors or the error constant. So in the transient term in the unit step response is CT is equals to E minus E raised to power T upon में T is equals to UT, and the steady state response of the unit step function is CSS. आपने देखिए इसके सबस्क्रिप्ट में हमने SS लगाया है. SS is a steady state and TR is a transient term which is equals to UT. What do you mean by transient term on the steady state term? We will discuss in next lecture shortly. So you can see the following figure for the unit step function. In this unit step function, at the value t is equals to 0, t is equals to 0 for all the negative value of t, and it is gradually increasing from 0 and reaching up to the 1. That is your steady state. You can see in this figure also. What do you mean steady state? A stable state. Steady state is an
when your state is in equilibrium, matlab constant. Now this you can see the exponentially increasing from 0 to 1, and 1 is your in steady state. So the steady state value is depend upon the magnitude of input. So you can see in this figure from the previous figure, uh, in the unit step response case, your function is exponentially increasing, and in the previous case, that is your impulse function case, your unit impulse response, that is exponentially decaying. So make sure आपको दोनों चीजें लर्न होनी चाहिए कि इन यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स में योर फंक्शन इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, and in the case of unit step or a step response, your function is correspondingly or exponentially increasing and reaching to the steady state value 1. Okay, so student, up to this value, up to this lecture, आपका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स हो गया है एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स हो गया. इन नेक्स्ट लेक्चर में हम रैम्प फंक्शन करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.